Welcome once again to all of you in my channel Blue Chip Finance. In today's video, we will discuss about business arithmetic, previous papers, question solution from 2010 to 2019, including supplementary papers, in which we will discuss about ratio, proportion, percentage, commission, discount, markup, markdown, and depreciation, etc. In all previous videos related to the topic business arithmetic, we discussed and solved the questions of the book Business Mathematics by Muhammad Abdullah and I think Nadeem Akhtar Siddiqui. And in today's video, we will solve and discuss different questions of all these papers. So let's start the video. So first of all, paper 2010, and first question is if the stay of 12 men for 28 days in a hotel cost rupees 6720, find the cost of stay of 8 men for 18 days. So it is the question of proportion. So first step is to identify the variables. फॉर एग्जाम्पल इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है मैन, और दूसरा वेरिएबल है डेज, और थर्ड वन वेरिएबल इज कॉस्ट. अब इसके अंदर जो मिसिंग वेरिएबल होगा उसको आपने एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर आपने रखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टे ऑफ 12 men for 28 days in a hotel cost rupees 6720, find the cost. So it means cost is the missing variable, so take this missing variable to extreme right or extreme left. It's up to you. So after taking cost to extreme right, now we fill the data. तो 12 men के नीचे 12 आ जाएगा. 28 days 6720 cost 6720 cost. Find the cost x, जो मिसिंग है उसको आपने x रखना. फाइंड द कॉस्ट ऑफ स्टे ऑफ 8 men फॉर 14 days. तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, आपने ये कर लिया. उसके बाद वन बाय वन मेक द रिलेशनशिप ऑफ ईच वेरिएबल विद द मिसिंग वेरिएबल. इफ दे हैव पॉजिटिव रिलेशन विद ईच अदर, अगर दोनों का आपस में मुस्बत ताल्लुक है या पॉजिटिव रिलेशन है. पॉजिटिव रिलेशन क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, तो वो पॉजिटिव ताल्लुक होगा. और नेगेटिव क्या है जी कि अगर एक के बढ़ने से दूसरा कम हो या एक के कम होने से दूसरा बढ़े, तो वो नेगेटिव ताल्लुक होगा. पॉजिटिव ताल्लुक के अंदर हम डाटा को चेंज नहीं करेंगे बल्कि उसी तरह डिवीजन में लिख देंगे. फॉर एग्जांपल अगर लोग ज़्यादा होंगे किसी भी होटल के अंदर रूम लेने के लिए, तो उनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि उनको ज़्यादा रूम्स चाहिए होंगे. तो इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशन है, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे बल्कि 12/8 लिख देंगे इसी तरह. अब आ जाए डेज़ के ऊपर कि जितने दिन ज़्यादा आप वहाँ पे स्टे करेंगे आपको कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा पड़ेगी. तो पॉजिटिव रिलेशन है, तो इसके अंदर भी आप इसको चेंज नहीं करेंगे बल्कि 28/14 आप लिख देंगे. और इसको तो चेंज करना ही नहीं है, ये 6720/x इसी तरह आएगा. अब जिस वक्त आपने ये लिख लिया, तो अब आपने क्या करना है जी कि ये जो 6720 है ऊपर वाले को इन नीचे वाले दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, और इस x को ऊपर वालों के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें. यानी x मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 6720 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 8, और इक्वल के दोनों तरफ रख लें इनको, और x के लिए सॉल्व कर लें. यानी कि ये आपका बन जाएगा जी 336x
एक्स, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं होनी चाहिए, ये आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालना। तो ये आ गया 336x इक्वल्स टू 752640, और x के लिए सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगा 2240। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है जी कि इफ़ द 16% इंक्रीज इन द बेसिक सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई will become ₹3248 per month. What is his salary before the increase? So, if the 16% increase in the basic salary, अगर किसी बेसिक सैलरी के अंदर 16% इंक्रीज आई है और उस इंक्रीज की वजह से ड्यू टू दैट इंक्रीज योर पर मंथ सैलरी इज 3248, विच मीन्स this 3248 is 116 equal parts. So if you want to calculate your salary before the increase, then just simply 3248 divided by 116 multiply by 100, क्योंकि उससे पहले आपकी सैलरी 100 थी, 100 इक्वल पार्ट्स थे, और 16 इन पार्ट्स जो हैं या 16% इंक्रीज की वजह से ये 116% ये सैलरी आपकी बन चुकी है। तो ये 3248 इक्वल्स टू 116 इक्वल पार्ट्स। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट योर सैलरी बिफोर द इंक्रीज, then you simply divide 3248 divided by 116 multiply by 100, 2800. Third question is that three partners invested rupees 18,000, rupees 16,500 and rupees 12,500 respectively. When profit was distributed, the third one got rupees 4625. Find the total profit earned. So first of all, you need to calculate the ratio between these three. So if ratio is not given, जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि रेशियो गिवन नहीं है, तो हमने इनकी इन्वेस्टमेंट को रेशियो बना लेना है। तो 18,000, 16,500 and 12,500. And now simplify this ratio. Simplification आप वैसे भी सॉल्व करना चाहे तो हो जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशंस बहुत एक्सीड कर जाएंगी। तो आप सिंपली इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें। कोई एक ऐसा टेबल देखें जिस पे तीनों, सिंप्लीफाई करने का मेथड ये याद रखें कि तीनों सेम टेबल के ऊपर कटने चाहिए। तो अगर आप इनको डिवाइड करें तो ये सिंप्लीफाई रेशियो जो है ये सिंपली 0000 तीनों में ख़त्म हो जाएगा, और ये 25, 33 और 36, यानी कि इधर 180, 165, 125 मज़ीद उसको आप जिस वक्त काटेंगे तो ये 5 के टेबल से 25, 33, 36, यानी कि ये सिंप्लीफाइड रेशियो है। आफ्टर द कन्वर्जन of their investments into the simplified ratio, now your ratio is 36, 33 and 25, which means if you earn profit, 36 equal parts of that profit will goes to A, 33 will goes to B and 25 equal parts will goes to C. Now what are the sum of this ratio? Sum of ratio is 36 plus 33 plus 25 equals to 94, which means you have 94 equal proportions or equal parts. And now your third partner C got profit of rupees 4625, which means 4625 is 25 equal parts of the profit. So if I have one equal part, I can calculate the profit of B and C very easily. So because this 4625 are 25 equal parts, so what is one part? One part simply 4625 divided by 25 equals to 185, और इस 185 को आप 94, क्योंकि टोटल जो इसके हैं जो इक्वल हिस्से हैं, इसके इक्वल पोर्शंस हैं, वो 94 है। तो एक पार्ट जो है वो है 185, तो सिंपली 185 को मल्टीप्लाई बाय 94 करेंगे
तो आपके पास टोटल प्रॉफिट निकल आ जाएगा 17390। अब अगर इस क्वेश्चन में तो यहीं तक पूछा गया, लेकिन अगर वो ए बी का भी अगर आपको कहा जाता कि कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कर सकते थे। 185 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑफ ए, 185 मल्टीप्लाई बाय 33 इक्वल्स टू द प्रॉफिट ऑफ बी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है जी वो है, इफ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स इज ₹3652, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ 85 सच शर्ट्स? Then first of all you will have to calculate the price of one shirt. आपके पास अगर 50 रेडीमेड शर्ट्स की प्राइस है 3652, तो आप सिंपली एक शर्ट की प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली इसको डिवाइड कर दें 50 के साथ, तो आपके पास एक शर्ट की प्राइस निकल आएगी। अब इसको एक जो शर्ट है उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई विद 85 एंड योर प्राइस ऑफ 85 शर्ट्स इज 6208.4। Question number 5. If ratio of cars and trucks is 7:2 and there are 26 trucks, how many cars are there? Same methodology will be applied here. आपके पास जो रेशियो है वो कार्स और ट्रक्स की वो है 7:2 की, और आपके पास 26 ट्रक्स हैं। हाउ मैनी कार्स आर देयर? तो सबसे पहले तो इसकी जो रेशियो बन जाएगी वो बन जाएगी 7:2:x/26, और जो आपके एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और जो मिडल में हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 26 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये आपका बन जाएगा जी 2x equals to 182, and solve for x, simply x equals to 182 by 2, so 91. So there are 91 cars. Question number 6, that find the value of motor car costing rupees 2,50,000 at the end of 7 years. कि आपके पास जो एक कार है जिसकी कॉस्ट है 2,50,000, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और उसकी द फाइंड द वैल्यू ऑफ मोटर कार कॉस्टिंग रुपीज 2,50,000 एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल के बाद बताएं कि उसकी वैल्यू क्या होगी जो आपको कॉस्ट पड़ी है 2,50,000। इफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 7.5% इज रिटन ऑफ ऑन द वैल्यू एट द कमेंसमेंट ऑफ ईच ईयर, यानी कि उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 7.5% है। तो सिंपल इज दैट आपके पास डाटा के अंदर 3 चीज़ें आ गई, एक आ गई कॉस्ट, एक आ गई टाइम पीरियड 7 ईयर्स, और एक आ गई जी आपके पास डेप्रिसिएशन की परसेंटेज यानी कि 7.5%। तो यहाँ पे इसके 2 फार्मूलाज हैं। देयर आर 2 फार्मूलाज टू फाइंड वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n years. Depreciated value of the asset after n years equals to C minus ND, where C is cost, N is number of year past, and D is depreciation amount. And second formula is depreciated value of the asset after n years equals to C multiplied by 1 minus R raised to power n. ये आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए ये फार्मूला, क्योंकि आपने इसका जो फार्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलता जुलता है, तो बड़ा इजी है आपके लिए सॉल्व करना। सी जो है वो कॉस्ट है, आर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और एन टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट कितनी आ गई जी 2,50,000, 1 माइनस आर। आर आपके पास हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट को या डेप्रिसिएशन रेट को हमेशा फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 0.075, रेज टू पावर टाइम पीरियड कितना है जी n इक्वल्स टू 7, तो 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.075 रेज टू पावर 7, एंड डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर n ईयर्स इक्वल्स टू 1,44,850। तो ये कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है, थोड़ा सा इसका मैं आपको बताता जाऊं कि आपको शायद क्लियर ना हो कि डेप्रिसिएशन जो आपके एसेट्स हैं, जो टेंजेबल एसेट्स हैं, टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि आप छूने से आपको महसूस कर सकें आप उनको, तो वो एसेट्स जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी वैल्यू में कमी आती है, वियर एंड टियर।
फॉर एग्जांपल आपके पास कार है, अगर उस कार को आपने आज लिया है तो वो उसकी वैल्यू आज से 10 साल बाद वो नहीं होगी जो आज है, यानी कि उसके अंदर टू फुट वियर एंड टियर आती है। तो डेप्रिसिएशन एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है कि हर साल के इख्तिताम के ऊपर, एंड के ऊपर, व्हाट इज़ द वियर एंड टियर वैल्यू, एंड रिमेनिंग वैल्यू जो है वो आपकी बुक वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो ये इस क्वेश्चन में भी यही बात पूछी गई कि एक चीज़ जो आपने 2,50,000 की ली, आफ्टर 7 years एट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 7.5%, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ दैट एसेट आफ्टर 7 years। तो ये बड़ा इजी सा फार्मूला है। आई प्रेफर दिस सेकंड फार्मूला, C मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस R रेज टू पावर n। अब आ जाएं जी 2011 के पेपर में कि इन अ होटल 10 men स्टे फॉर 16 days कॉस्ट ₹8,000, हाउ मैनी डेज 15 men कैन स्टे विद द अमाउंट ऑफ 9750। तो सबसे पहला काम क्या है जी, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, और जो मिसिंग वेरिएबल है उसको एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट पे रखना। तो अब इसके अंदर वेरिएबल्स जो हैं वो है जी होटल 10 men, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल इज मैन, सेकंड वेरिएबल इज डेज, एंड थर्ड वेरिएबल इज कॉस्ट। So what is the missing variable? How many days? Days are missing. So take days either to right side or left side. So we take days to the right side. So men, cost and days. So now fill up the data. In a hotel, 10 men. So place 10 here. Stay for 16 days. Place 16 here. Cost ₹8,000. Place 8,000 here. How many days? So X should be placed here. 15 men, 15 should be placed here, can stay with the amount of ₹9750. So your first step is completed. Now what is the second step? Second step is to identify the relationship of each variable with this missing variable. तो अब आप देखें कि ये बड़ा इजी है कि आप देखें कि आप किसी होटल के अंदर अगर आप स्टे करते हैं तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने एक स्पेसिफिक कॉस्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉस्ट को अगर मैं फिक्स कर लूं तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने कम दिन मुझे स्टे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कॉस्ट को मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया, कांस्टेंट ले लिया, और मेरे पास 8,000 है अगर, और उसके अंदर कुछ लोग अगर उस होटल के रूम्स में रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो अगर मेरे पास कॉस्ट फिक्स है, कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, मेरे पास पैसे मज़ीद नहीं हैं, और अगर लोग ज़्यादा आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि उन फिक्स्ड पैसों के अंदर कम दिन मुझे रहने को मिलेंगे क्योंकि बाकी रूम्स मुझे लेने पड़ेंगे। तो इनका आपस में मैन का और डेज का ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर प्रीवियस आप देखें तो उसमें पॉजिटिव निकल रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नेगेटिव निकल रहा है। तो ये ज़रा बड़े गौर से आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं। कि आप, मेरे पास पैसे फिक्स्ड हैं, आई हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एंड आई स्टे फॉर एग्जाम्पल 16 days, and if I have fixed amount of money and I have more men as a companion with me and I need more rooms in that fixed amount, then I am able to stay less days in that fixed amount. So ये इनका आपस में नेगेटिव रिलेशन आ गया, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे 15/10। अब आ जाएं जी कॉस्ट के ऊपर कि अगर डेज ज़्यादा होंगे तो मुझे कॉस्ट भी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, या मेरे पास अगर अमाउंट ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा दिन वहाँ पे रुक सकता हूँ। तो इनका आपस में कॉस्ट का और डेज का पॉजिटिव रिलेशन है। तो या सिंपल इज दैट कि अगर डेज ज़्यादा दिन मैं रुकता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव रिलेशन है। तो पॉजिटिव रिलेशन के अंदर हम इनको रिवर्स नहीं करते। सो 8,000 बाय 9750। इन नेगेटिव रिलेशन वी रिवर्स दैट ऑर्डर एंड इन पॉजिटिव रिलेशन वी डू नॉट
रिवर्स दिस ऑर्डर सेम एज इट इज जैसे है हम इसको लिख देंगे और इसको तो चेंज करते ही नहीं है। अब इसके बाद सिंपली x शुड बी मल्टीप्लाई विद 8015 एंड 16 विद मल्टीप्लाई विद 9750 एंड 10 और इक्वल के दोनों तरफ इनको रख लें और ये आपके पास बन जाएगा जी इसको भी आप मल्टीप्लाई लिखें और ये आपके पास बन जाएगा 1,20,000 x इक्वल्स टू 1560000 एंड सॉल्व फॉर x 13 days इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इन अ पार्टनरशिप A invested 8,000, B invested 6,000, C invested rupees 5,000. If their profits total rupees 12,000, how much did each receive if the profits were divided in the ratio of their investment? So previous question के अंदर किसी एक पार्टनर का प्रॉफिट उन्होंने बता दिया था तो उसकी मदद से और उसी में हमने डिस्कस किया था कि हम हर पार्टनर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ रेशियो इज गिवन देन इट्स ओके, इफ रेशियो इज नॉट गिवन देयर इन्वेस्टेड अमाउंट शुड बी टेकन एज देयर रेशियो। सो पार्टनर ए इन्वेस्टेड 8,000, B invested 6,000 and C invested 5,000. So just first of all simplify this ratio. So 000 will be cancelled in each and 568 865 is simplified ratio. कोई भी एक ऐसा टेबल जो तीनों के ऊपर जाए, यानी कि सिंप्लीफाइड रेशियो कहते किसे हैं कि उसके बाद मजीद ये कटिंग ना की जा सके। कोई सेम टेबल एक ऐसा लें जिसके ऊपर तीनों ये कैलकुलेट हो जाएं। तो 1000 का टेबल अगर आप देखें 1005 आर 5000, 1006 आर 6000 एंड 1008 आर 8000. So that is your simplified ratio. Now next step is to sum this simplified ratio 865 equals to 19. Now what is your profit? Your profit is 12,000. So first of all calculate one part of your profit. This 19 means then that you have 19 equal parts which should be distributed among A, B and C, and 8 part out of 19 parts should be given to A, 6 part out of 19 parts should be given to B, and 5 part out of 19 parts should be given to C. And I have 12,000 in profit total. So 12,000 divided by 19 equals to 1 part. Multiply by 8 equals to 5052.63 should be given to A. Multiply by 6 3789.47 should be given to B. And multiply by 5 equals to 3157.9 should be given to C. Question number 3 of paper 2011, that if 45% of number is 3000, what is the number? Okay, so this means that 3000 is 45 equal parts, and if I have one part, I just simply multiply with 100 and I have the exact number. So if 45% of a number is 3000, we don't know about the number. So we have one hint that this 3000 is 45 equal parts. So 3000 divided by 45 equals to 1 part, multiply by 100 equals to 6666.67. So that is the whole number. For example, if I want to confirm this, either I am right or wrong, just simply 6666.67 multiply by 0.45 equals to 3000. So that is correct. Fourth question is that the profit sharing ratio between A and B is 2:3. The ratio between B and C is 4:7. So one thing is clear from the start that it is the question of continued proportion. The question in which ratio is given in two different sets, for example A and B and B and C, then it should be the question of continued proportion.
Why continued? Because ratio of B is appeared 2 times. So that is the question of continued proportion. So first of all, this type of question, we have one method to write the ratio. For example, we have 3 partners A, B and C. So first of all, we write down the ratio of AB, that is 2, 3. 2 and 3. Now we have another ratio of B and C is 4, 7. So take the next row, write 4 and 7 and multiply in order, that 2 multiply by 4, 4 multiply by 3 and 3 multiply by 7 in a zigzag position. 2, 4, 4, 3, 3, 7. So 2 multiplied by 4 equals to 8, 4 multiplied by 3 equals to 12 and 3 multiplied by 7 equals to 21. So if it is a simplified ratio, then it's okay. But if it can be divided furthermore, you can do this. But here in this case 8, 12 and 21, it is a simplified ratio because there is no table on which we can divide these three. So 8, 12 and 21 is simplified ratio. So take the sum of this ratio 8, 12 and 21, which is equals to 41, and rest of the procedure is same. You have a profit of 41,000, which means there are 41 equal parts. Out of these 41 equal parts, 8 parts should be given to A, 12 parts should be given to B and 21 parts should be given to C. So simply 41,000 divided by 41, multiply by 8, 8,000, multiply by 12, 12,000, multiply by 21, 21,000. So 8,000 out of 41,000 should be given to A, 12,000 out of 41,000 should be given to B and 21,000 out of 41,000 should be given to C. Question number 5 of paper 2011, that what is the cost of colored Sony TV set which is sold for rupees 9800 if the percent markup is 40% on cost, which means that cost is 100% and we are making profit 40% above cost, and the selling price in which cost is included and profit is also included, which means this 9800 is equals to 140 equal parts, in which 100 parts goes to the cost and 40 parts goes to the profit. So what we needed to calculate here, what is the cost of colored Sony TV set which is sold for rupees 9800 if the percent markup is 40% on cost. कॉस्ट होती है 100% और मार्क अप का मतलब है कि प्रॉफिट, कि 40% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस के अंदर 40% प्रॉफिट इंक्लूड है. तो विच मीन्स 9800 there are 140 equal parts in 9800. So if we have one part, we just simply multiply with 100 and we can calculate cost. So 9800 divided by 140 multiply by 100 equals to 7000. So 7000 is cost of this set. In markdown we reverse that order. For example, markdown के अंदर क्या है जी, लॉस. तो लॉस में, लॉस आपको पता है हमेशा कॉस्ट से कम चीज जिस वक्त आप सेल करते हैं तो आप लॉस में जाते हैं. तो वो जिस वक्त क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. So okay, next question, paper 2012. Total cost of heating and lighting was rupees 10,800 of a firm. For the winter season, the ratio of consumption between heating and lighting was 3:1. Find heating and lighting cost respectively. It is very easy question, that there are two heads of expenditure. One is for heating and other one is for lighting, and total expenditures are 10800, and heating and lighting expenditures ratio is 3:1, which means there are three parts of expenditure related to heating and one part of expenditure is related to lighting.
So very simple question, just take the sum of the ratio 3 1 which is equals to 4. So 10800 are 4 equal parts of total expenditures, and 3 parts will goes to heating and 1 part will goes to lighting. So 10800 divided by 4 multiply by 3 and multiply by 1, so 8100 will goes to lighting, heating and lighting. Okay, so and lighting cost is 2700. So next shop, the price of pair of shoe was rupees 350, which is 30% less of actual price. Find the original price. So it is the question of markdown. We can say that 30% less means the seller is charging from you only 70% of the price, which is 350. So if we have one part and multiply with 100, we can calculate the 100% price. So 350 divided by 70 multiplied by 100 equals to 500. Question number 3 is that what is the amount of commission on sale of rupees 25,000 if the rate of commission is 5.5% on first rupees 15,000 and 6% on our rupees 15,000. कि एक सेल है जी आपकी 25,000 की, तो पहले 15,000 के ऊपर 5.5% है कमीशन और अबव 15,000 6% कमीशन है. तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन के अंदर आपने लेना है 5.5, फ्रैक्शन के अंदर लेना बहुत आसान है 5.5 डिवाइडेड बाय 100, 5.5 divided by 100, 0.055. So 15,000 multiplied by 0.055 equals to 825. अब 15,000 से above कितने हैं जी 10,000. So 10,000 multiplied by 0.06 equals to 600. So total commission is 1425. Question number 4. That in a factory, a group of 30 workers working 8 hours a day can produce 3,000 units in 20 days. So there are 4 variables involved in this question. And first step is to write down the variables. So first variable is workers, second variable is hours, and third variable is units, and fourth variable is days. After identifying variables, the next important step is to locate the missing variable in how many days. So which means days are missing. सो डेज को आपने या तो एक्सट्रीम राइट के ऊपर रखना है या एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर, ये ज़रूरी है. अगर आप इसको मिड में कहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं से गलत हो जाएगा. तो वी टेक डेज एट द एक्सट्रीम राइट. इट्स अप टू यू, आइदर यू कैन टेक इट ऑन एक्सट्रीम राइट और टू एक्सट्रीम लेफ्ट. सो आफ्टर write down the variables, the next step is to put the data into this data form. So 30 workers working 8 hours a day can produce 3,000 units in 20 days. So missing is days, so place X here. After that, in how many days? 25 workers will produce 2,500 units by working 10 hours a day. First step has completed. Next step is to make the relationships of all these known variables with unknown variable one by one. So if you have a project to complete and if you have more workers, then less days are required to complete that project. Very simple अंडरस्टैंडिंग. कोई इसके अंदर बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है. थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड अपने माइंड के अंदर बनाएं कि अगर एक काम है
उसके अंदर अगर वर्कर्स आपके पास ज़्यादा हैं तो आपको कम दिन चाहिए. इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट टू कंप्लीट एंड इफ़ यू हैव मोर वर्कर्स then you need less days to complete that project. Very simple and logical. So there is inverse relation or negative relation between workers and days. So just reverse the order, 25 by 30 rather than 30 by 25. Now next, hours and days. If you work more hours in a day, then you need less days to complete the project. Very simple. अगर आप एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करते हैं तो आपको कम दिन लगेंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. तो इनवर्स और नेगेटिव रिलेशन बिटवीन आवर्स एंड डेज. सो रिवर्स दैट ऑर्डर, 8 10 by 8 rather than 8 by 10. Now third, units and days. If you need more units, then you need more days. ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा दिन चाहिए. या दूसरी तरफ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आप अगर ज़्यादा दिन यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे. तो पॉजिटिव रिलेशन है इन दो के बीच में. तो ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. 3000 बाई 2500 और ये इसी तरह आएगा 20 बाई एक्स. एक्स को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें और 20 को नीचे वालों के साथ. सिंपल. तो एक्स मल्टीप्लाई बाई 3000 multiply by 10 multiply by 25. X multiply by 3000 multiply by 10 multiply by 25 equals to 25 multiply by 20 multiply by 2500 multiply by 8 multiply by 30. इनको नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें and solve for X. So 16 days. The next question is that a radio set cost a manufacturer rupees 1200. So 1200 is a cost to produce it and he sells it to a retailer for rupees 1500 और वो 1500 के ऊपर इसको सेल करता है. Find his markup percent on cost. So simple is that selling price is 1500, cost is 1200, or you can very easily calculate. There are different methods to calculate. For example, if you calculate profit, for example, 1200 is cost and 1500 is selling price. So what is the profit? Profit is 300. So 300 divided by cost multiplied by 100 equals to 25%. There is another way. For example, selling price is 1500 divided by cost price 1200 multiplied by 100. So 125, which is above 100 and how much above 25? So 25 is your profit, 25% is your profit. Question paper 2013. A shopkeeper allows a discount of 15% on his shop. How much money can a man save if he buys a bag costing rupees 2500, shaving set costing rupees 890 and an iron costing rupees 2800? So simply you have flat 15% discount. Just add up these three amounts, 2500, 890 and 2800, which is equals to 6190, and take the 15%, 6190 multiply by 0.15 equals to 928.5. So you save 928.5. Next question, that a firm sells a product for rupees 450 per unit. If the profit percentage is 15%, then find the cost price of the product. For example, selling price is 450, in which 15% of profit is included, and you want to calculate cost price. I already defined this type of question in which cost and profit both are included. That is called selling price in profit. So in this 450, your 100% of cost is involved and 15% profit is also involved. So if you want to calculate the cost of the product, you simply just divide by 115
you will get 1% and multiply with 100, and 391.30 is your cost. Next question, that Mr. Amir and Mr. Hamid decided to buy a new car costing rupees 6 lakh each. Case A, Mr. Amir paid for his car cash and was given a discount. Given that he paid 5,70,000 cash, calculate the percentage discount he received. It is very simple, that how much discount you get. The cost price is 6 lakh, 6 लाख की कार है, और केस ए में वो कहता है जी कि डिस्काउंट मिला है, और वो डिस्काउंट लेने के बाद आपने 5,70,000 उसको पे किया. देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 30,000. और इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लें कि ये 30,000 कॉस्ट का कितने परसेंट है. तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 5%. So this is 5% percentage of discount. And case B, Mr. Kaleem, Mr. Zahir, Mr. Naveed enter into a business with the capital of rupees 1,50,000, 2,10,000 and 3,60,000 respectively. How much profit will Mr. Zahir and Mr. Naveed get if Mr. Kaleem gets rupees 30,000? So it is the same question, just data is changed, which we already discussed in previous paper, I think 2010 or 11. So first of all, there is no ratio, so you will have to make first simplified ratio on the basis of their investments. So Mr. Kaleem's investment is 1,50,000, Zahir's investment is 210, and Naveed investment is 360,000. So first of all, make the simplified ratio, so in which you need one table which goes to all these digits. So simply 15, 21 and 36. This is simplified ratio, or you further you can divide. For example, the table of 3 will goes on all these 3. 3 5s are 15, 3 7s are 21 and 3 12s are 36. So it is your simplified ratio 5, 7, 12. So take the sum of the ratio. So there should be 24 equal parts, in which 5 parts will goes to Mr. Kaleem, 7 parts will goes to Mr. Zahir, and 12 parts will go to Mr. Naveed. Now what is your profit? Your profit is 30,000, and 30,000 30,000 is the profit of Mr. Kaleem. So what are the proportions of Mr. Kaleem? Mr. Kaleem is getting 5 equal parts. So which means these 30,000s are 5 equal parts. So you need to calculate one part. If you have one part, you can very easily calculate 7 and 12 parts. So 30,000 divided by 5 equals to 6,000. So 6,000 is one part out of 5 part, or you can say out of 24 parts. So 6,000 multiplied by 7 equals to 42,000, and 6,000 multiplied by 12 equals to 72,000. So Zahir's profit is 42,000 and Naveed's profit is 72,000. Questions paper 2014. Out of 80,000 seats in a cricket stadium, total seats are 80,000. 12% seats were occupied by VIPs. Out of 80,000, 12% seats were occupied by VIPs, and 39040 seats by general public. What percentage of the stadium remained unoccupied? So first of all, your data, that total seats are 80,000. VIP seats, those are occupied by VIPs, are 12%, and general public hold 39040 seats. So general public seats percentage, you simply क्योंकि आपके पास VIPs की तो परसेंटेज है लेकिन जनरल पब्लिक की नहीं है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आउट ऑफ 80,000, 39040 seats were occupied by general public. So simply we calculate percentage through 39040 divided by 80,000 multiplied by 100 equals to 48.8%. So now you have percentage for both VIPs and general public. VIPs hold 12%,
and general public hold 48.8%. So total seats are 100%, 100% minus 12%, minus 48.8%, 39.2% seats are unoccupied. इनके ऊपर ये खाली. Next question, that a profit of rupees 24,000 is to be distributed among four partners A, B, C and D in the ratio of 3, 4 to 1 respectively. How much profit will each partner get? बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर रेशियो भी उन्होंने दे दी है और 24,000 प्रॉफिट है और रेशियो का सबसे पहले सम ले लें 3, 4 to 1 इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स जाएंगे ए को, 4 पार्ट्स जाएंगे बी को, 2 पार्ट्स जाएंगे सी को और 1 पार्ट जाएगा डी को. सिंपली प्रॉफिट को डिवाइड करें 10 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1. सो दीज आर प्रॉफिट्स फॉर ए, बी, सी एंड डी. Third question is that Mr. Khan purchases 10 color TVs for his shop for rupees 25,000 each. 10 color TV sets हैं, एक की कॉस्ट है 25,000. He wants to sell them at 25% profit. He offers a discount of 5% to his customers. What net amount would he gain? So first of all, calculate the profit of one TV set. He want to get profit of 25%. यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट है, ये याद रखें कि ये 10 कलर टीवी सेट्स ये खरीदता है, एक की कॉस्ट है 25,000. ही वॉन्ट्स टू सेल देम एट 25% प्रॉफिट. सिंपल इज दैट. 25% प्रॉफिट के ऊपर वो बेचना चाहता है. अगर वो डिस्काउंट 5% देता भी है तो वो लाजमी बात है प्राइस को बढ़ा कर बताएगा. तो अगर वो पूछता कि वो प्राइस कितनी ऑफर करेगा, फिर ठीक है, फिर हम डिस्काउंट को भी कंसिडर करते हैं. लेकिन उसने सिंपल कहा है व्हाट नेट अमाउंट वुड ही गेन. सिंपल इज दैट कि उसको गेन कितना हुआ है. तो सिंपल लॉजिक है कि एक टीवी सेट है 25,000 का और उसको 25% प्रॉफिट के ऊपर वो बेचना चाहता है. तो सिंपल इज दैट उसका 25% कैलकुलेट कर लें कि क्या बनेगा. 25% फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इक्वल्स टू 6250. 6250 इज अ गेन ऑन वन टीवी सेट. तो 6250 मल्टीप्लाई बाय 10 equals to 62500. Question number 4. A sales girl got salary and a commission of 5% on her sale. If she made a sale of rupees 25,000 and got a total of rupees 5250, what was her salary? अब इस क्वेश्चन को जरा समझ लें कि a sales girl got salary and a commission of 5%. कि एक सेल्स गर्ल है, उसको सैलरी भी मिलती है और 5% कमीशन भी मिलता है. दो चीज़ें. सैलरी लाजमी बात है फिक्स होगी, कमीशन उसकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ शी मेड अ सेल ऑफ रुपीज़ 25,000, अगर वो 25,000 की सेल करती है एंड गॉट अ टोटल ऑफ रुपीज़ 5250 और उसको उसके बदले में इंक्लूडिंग सैलरी 5250 मिलता है. व्हाट वाज हर सैलरी. तो सबसे पहले तो हम कमीशन को कैलकुलेट करेंगे कि कमीशन बनेगा कितना. वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि सैलरी कितनी है. 25,000 multiplied by 0.05 equals to 1250. 1250 is her commission. And what she get? She get 5250. She gets 5250. In 5250, 1250 is her commission. So remaining should be her salary. बाकी पैसे उसकी सैलरी के हैं 4,000. Paper 2015, question number 1. A businessman on an investment of rupees 1,000 made a profit of rupees 300. What percent did he make on his investment? Very simple question. 300 प्रॉफिट है, 1000 की इन्वेस्टमेंट है. प्रॉफिट सिंपली कैलकुलेट कर लें इसका. 300 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 30%. Question number 2, that what is the amount of commission on sale of rupees 30,000 if the rate of commission is 5% on first rupees 20,000 and 6% on over rupees 20,000. 30,000 की आपकी सेल है, उसके ऊपर फर्स्ट 20,000 के ऊपर 5% कमीशन है और उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर 6% कमीशन है. और सेल आपने कितनी की? 30,000 की. तो 30,000 में से पहले तो 20,000 का 5% कैलकुलेट कर लें, विच इज़ इक्वल्स टू 1,000.
And what is our amount? Our amount at 10,000, because 30 out of 30,000, 20,000 amount has calculated, commission has calculated on 20,000, so remaining is 10,000. 10,000 multiplied by 0.06, 600, so total commission is 1600. What number is 20% more than rupees 9,000? वो कौन सा नंबर होगा जो 9,000 से 20% ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब है कि 9,000 100 इक्वल पार्ट्स हैं, और अगर हम इसे 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वो नंबर निकल आएगा. तो 9,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, तो 10800. Question number 4. 15 machines working 8 hours a day can produce 360 units in 6 days. How many variables are involved in this question? Machines, hours, days, units. And what is the missing variable? If 3 machines are out of order, how many units are missing? So keep units to the extreme right or extreme left. Now put the data. 15 machines working 8 hours a day can produce 360 units in 6 days. If 3 machines are out of order, कि 3 machines अगर खराब हैं तो 15 minus 3 equals to 12. How many units are missing? Place X here. Could be produced by running the remaining 10 remaining machines 10 hours a day for 8 days. Next step is to make the relationship. If you run more machines, more units can be produced. मशीन ज्यादा होंगी, यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे. पॉजिटिव रिलेशन. नो नीड टू रिवर्स द ऑर्डर. सिंपली 15/12. ज्यादा घंटे काम करेंगे, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे. पॉजिटिव रिलेशन. नो नीड टू रिवर्स द ऑर्डर. सिंपली 8/10. ज्यादा दिन काम करेंगे, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे. पॉजिटिव रिलेशन. नो नीड टू रिवर्स द ऑर्डर. 6/8 एंड 360/x. आगे सिंपल है. x को मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वालों के साथ, 360 को मल्टीप्लाई कर दें नीचे वालों के साथ. तो x मल्टीप्लाई बाय 6, x multiply by 6 multiply by 8 multiply by 15 and 360 multiply by 8 multiply by 10 multiply by 12 and solve for x. X equals to 480. Next question is that the price of a share in stock exchange dropped from 62.50 to rupees 52.50 in a week. What was the percentage change in the price of share? एक प्राइस है शेयर की, वो ड्रॉप हुई है, और कितनी ड्रॉप हुई है माइनस कर लें. 62.50 माइनस 52.50, सो $10 या 10 रुपीज ड्रॉप हुई है इसकी प्राइस. ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 62.50. सो 10 डिवाइड बाय 62.50 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 16%. देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट दिस. सिंपली what is the price after drop? 52.50 divided by what is the original price? 62.50 multiply by 100. 84 is 16 less than 100. So in this way you can also calculate this. Paper 2016, ratio of the ages of 3 children is 2:1. The sum of their ages is 32 years. Find the ages of the youngest and the eldest child. So simply ratio is given. First of all, take the sum of the ratio. 2 plus 5 plus 1 equals to 8. Now what is the sum of their ages? 32 years. There are 8 equal parts. So first of all, you calculate one equal part. So 32 divided by 8 equals to 4. 4 multiplied by 2, 4 multiplied by 5 and 4 multiplied by 1. 8 years. Second child age is 20 years and third child age is 4 years. So the age of the youngest child is 4 years and the eldest age is 20 years.
Mr. Alam purchased 10 laptops, each cost rupees 32,000. He is allowed a trade discount of 12%. He also has an offer of 8% cash discount. How much amount he has to pay finally? So one laptop cost is 32,000 and he want to purchase 10 laptops, so 32,000 multiplied by 10 equals to 320,000. Now discount 8% and 12%, total discount is 20%. So just simply 320,000 multiplied by 0.20 equals to 64,000. So discount amount is 64,000 and amount he actually paid 320,000 minus 64,000 equals to 256,000. Question number 3. A factory makes 1554 units in 14 days with the help of 20 workers. Once again, it is a question of proportion. So how many variables are involved? Units, days and workers. And what is the missing variable? If 2 workers go on leave, how many units? Units are missing. So take units to the extreme right or extreme left and put the data. 1554 units in 14 days with the help of 20 workers. If 2 workers go on leave, so how many workers are left? 20 minus 2 equals to 18. How many units can be produced if they are only 10 days? They have only 10 days. So 10 days and X is missing. So next step is to make the relationship. If you have more workers, more units will be produced. Positive relation. So 20 by 18. Change करने की ज़रूरत नहीं. If you have more days, more units can be produced. Once again, positive relation 14 by 10 and 1554 by X. X should be multiplied with 14 and 20 and 1554 multiplied with 10 and 18 and solve for X. 999 units. Questions paper 2016 supplementary. A contractor agreed to mix gravel, sand and cement in the ratio of 8:3 in concrete work. He used 48,000 pounds of mixture in completion of work. What is the quantity of each material used? Simply ratio is given 8:3, take the sum of the ratio which is 16, 8 plus 5 plus 3. What is the total mixture? 48,000 pounds, and 48,000 pounds divided by 16 multiplied by 8, 48,000 divided by 16 multiplied by 5, 48,000 divided by 16 multiplied by 3. First ratio is for gravel, second ratio is for sand, and third ratio is for cement. So 24,000 pounds, 15,000 pounds and 9,000 pounds. Question number 2, that 6 men can paint a house in 4 days. How long would it take to paint the house if 2 men are employed? So question of proportion. So how many variables are involved? Men and days. So 6 men paint a house in 4 days. 4 days. How long will it take? So days are missing. If to take the paint the house, if 2 men are employed, if number of men are increased, then less days are required to paint the house. So there is an inverse relation and equation. अगर inverse relation है तो हम इसको change कर देंगे order को, 6/2 की जगह 2/6 equals to 4/6. Cross multiply, 2 multiplied by x equals to 4 multiplied by 6. So 2x equals to 24. Solve for x. 12 days are required. A salesman is paid a salary of rupees 500 a month and 1% commission on sales. If his total income in 1 month is 750, find the value of his sales in that amount. It means that out of this 750, 500 is his salary. So remaining commission amount is 250. 250 is amount of commission, and commission is 1% of sale. So which means 250 is 1% of 100% sales. So 250 divided by 1 multiply by
100 equals to 25,000, and you can confirm this that 25,000 multiplied by 0.01 equals to 250. So 1% commission. Question number 4, that 25 workers complete a job in 20 days, working 8 hours a day. In how many days? So days are missing. Take days to the extreme right. Now fill up the data. 25 workers complete a job in 20 days. 20 days, 8 hours a day. 8 hours a day. In how many days? X place, you place X here. 20 workers will complete a job for complete the work for 10 hours a day. So next step is to make the relationship. If you have more workers, less days are required to complete the job. So inverse relation, if number of workers increase, less days are required to complete the job. So there is an inverse relation between number of workers and days. So 20 by 25, रिवर्स कर दें इसको. अगर आप ज्यादा घंटे काम करते हैं, if working hours increases, less days are required to complete the job. So there is an inverse relation between working hours and days. So reverse the order, 10 by 8, 10 by 8, and third one जो है वो same ही रहेगा, 20 by x, 20 by x. Now x multiply with 10 and 20, and 20 multiply with 8 and 25, and solve for x. X will be equals to 20 days. Question number 5. Sultan Ahmed purchased merchandise for rupees 7,500. He was allowed a trade discount of 7%. Found the amount of discount. Very simple. 7,500 is purchase amount. Discount percentage is 7%. So 7,500 multiplied by 0.07, or simply multiply with 7 by 100 equals to 525. Questions paper 2017. A milkman mixes milk with water, which is a bad thing, in the ratio of 7:2. 7:2 रेशियो के साथ है, यानी 7 रेशियो है जी मिल्क की और 2 रेशियो है वाटर की. He has 81 liters of mixed milk. What is the quantity of pure milk? So total quantity is 81 liter. Ratio is 7:2. 7 goes to milk and 2 goes to water. Sum of the ratio is 9. So which means this 81 liter of mixed milk has 9 equal parts, in which 7 parts are related to the pure milk and 2 parts are related to the water. So 81 divided by 9 multiplied by 7 equals to 63 liter is amount of milk, and 18 liter is amount of water. Question number 2, that Asad's monthly salary is rupees 5,800 per month, and his boss promises him a 12% raise at the first of next year. What will be his monthly salary after the raise? So very simple question. Salary is 5,800, and after 12% increase, you simply calculate the 12% of 5,800 is 696. So his next salary on the next year will be 5,800 plus 696 equals to 6,496. A house was sold for rupees 220,000 by agent who received a commission of 1.5 or 1 by 2%. How much commission did he receive? तो टोटल सेल कितने की? ये 2,20,000 की. कमीशन कितना है? 1.5%. तो सिंपली कैलकुलेट कर लें 1.5%. सो फ्रैक्शन 1.5 किया जी 0.015, और यू कैन से सिंपली 220,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डिवाइडेड बाय 100, और सिंपली मल्टीप्लाई विद 0.015 इक्वल्स टू 3,300. तो 3,300 शुड बी हिज कमीशन. A manufacturer offered 33 1/3% commission to an agent to sell his old stock. कि एक मैन्युफैक्चरर ने ऑफर किया है 33 1/3% कमीशन एक एजेंट को कि अगर वो उसका स्टॉक सेल करे. द एजेंट रिसीव्ड रुपीज़ 15,000 एज कमीशन, और एजेंट ने 15,000 कमीशन वसूल किया. फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. सिंपल इज दैट कि ये 15,000 कमीशन जो है ये कितने परसेंट है? 33 1/3.
तो अगर आप आपके पास इसका एक बराबर हिस्सा आ जाए तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपको मालूम हो जाएगा. सो 15,000 डिवाइडेड बाय 33.33 मल्टीप्लाई विद 100 45,004.500. Questions paper 2017 supplementary. The length of Pakistani flag is 1.6 meters. The ratio between green and white parts is 3:1. Find the length of green part. So green part is 3 and white part is 1. So take the sum of the ratio. 3 plus 1 equals to 4. Total length is 1.6 meters. 1.6 divided by 4 multiplied by 3 equals to 1.2 meter goes to green and 0.4 meter goes to white. A car runs 150 kilometers in 10 liters of petrol. How much petrol would be used to travel to 80 kilometers? So per kilometer consumption of petrol is 10 liters. In 10 liters, car runs 150 kilometer. So 0.067 liter per kilometer. And if he want to travel 280 kilometers, simply 280 multiplied by 0.067 equals to 18.76 liters. He needs 18.76 liters to cover 280 kilometers. Question number 3, that a shopkeeper bought a bag of rice for rupees 400 and sold it for rupees 480. Find the profit percent. Very simple, that in this 480, 100% of cost and amount of profit is also included, in which cost is 400. So what is the profit? Profit is 80 rupee. So 80 divided by 400 multiplied by 100. So 20% profit. There is another way to calculate this, that what is the selling price? 480. What is the cost price? Divided by 400 multiplied by 100 with 120. So 20 is above than 100. So 20% is profit. A TV set costing rupees 12,000 was purchased for rupees 11160. Find out the rate of discount. There are many ways to calculate this, but simple way, that 11160 is the selling price divided by original price 12,000 multiplied by 193, which is 7 less than 100. So 7% discount. There is another way, that in amount what you are getting 840. 840 divided by 12,000 multiplied by 100 equals to 7%. A commission agent sold goods for rupees 60,000. Find out his commission if he received 5% commission. So total sale is 60,000. 5% commission, just simply 60,000 multiplied by 0.05 equals to 3,000. So 3,000 is his commission. Question number 6, that if 6 pumps raise 108 liters of water in 12 minutes, how long will 4 pumps take to raise 96 liters of water? Proportions questions. So how many variables are involved? First variable is pumps, second variable is liters, third variable is time or minutes. So if 6 pumps raise 108 liter of water, 108 liter of water in 12 minutes, time 12 minutes. How long mean time is missing? Will 4 pumps take to raise 96 liter of water? 96 liter of water. Next step is to make the relationship of known variables with missing variable one by one. If you have more pumps to raise the water, you need less time to raise the water. अगर पंप्स ज़्यादा होंगे तो कम वक्त लगेगा पानी निकालने में. तो रिवर्स रिलेशन है इनका, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव. सो चेंज कर दें इस ऑर्डर को 4/6. अब आ जाएं जी वाटर को और टाइम को. अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो लाजमी सी बात है ज़्यादा वक्त लगेगा. तो पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन वाटर एंड टाइम. सो 108/96, देयर इज़ नो नीड टू चेंज द ऑर्डर. And 12 by x. Simply x multiply with 108 multiply by 4 and 12 multiply with 96 and 6 and solve for x 16 minutes. Question number 7, that on a cut price shop, the price of pair of shoe is rupees 400, which is 20% less of the actual price. What is the original price? यहाँ पे simple methodology apply करें.
कि एक कट प्राइस शॉप के ऊपर एक चीज़, एक शू 400 का सेल हो रहा है जो एक्चुअल प्राइस से 20% लेस है, तो इसका मतलब है कि ये 100 में से 20 लेस है, यानी कि 80% चार्ज कर रहा है वो आपसे। तो आपके पास अगर एक हिस्से की आपको मालूम हो जाता है तो मल्टीप्लाई विद 100 करें तो आपको मालूम हो जाएगा। सो 400 डिवाइडेड बाय 80, 20% लेस आउट ऑफ 100% is equals to 80. So 400 divided by 80 multiplied by 100 equals to 500. Next question related to paper 2018. A t-shirt marked at rupees 145 was sold for rupees 100 in the clearance sale. Find the rate of discount. Simply कितने की सेल हो रही है जी? 100 की, उसकी मार्क प्राइस है 145, तो कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? सिंपल इज दैट 100 डिवाइड बाय 145 मल्टीप्लाई बाय 100, 69, यानी कि चार्ज किया जा रहा है 69। 100 में से कितना कम है? 31, तो 31% डिस्काउंट। देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट दैट हाउ मच डिस्काउंट 145 minus 100 equals to 45, 45 rupee is discount. So 45 divided by 145 multiply by 100, 31%। सो 31% डिस्काउंट जो है वो इस पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड्स 97% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स रुपीज 600। सो इफ हिज स्पेंडिंग इज 95%, अगर एक्सपेंडिचर 97% हैं तो इसका मतलब है कि सेविंग 3% है, और सेविंग उसने अमाउंट में बता रही है। सो दिस सेविंग इज 3% ओनली। व्हाट इज हिज इनकम? So this 600 is 3%, and if we have one equal part, we just simply multiply with 100 and we get total income. So 600 divided by 3 multiplied by 100, 20,000. 20,000 is his total income. Now you can confirm your answer. 20,000 multiplied by 0.03 equals to 600, and 20,000 multiplied by 0.97, so it means his consumption is 19,400. Third question, that a motorcycle worth rupees 29,500 was sold at a loss of 40% after an accident. Find the loss and selling price. So इस क्वेश्चन के अंदर एक बाइक है जिसकी वर्थ है या कॉस्ट है या कीमत है 29,500, was sold at a loss of 40%. So what is the loss of 40% on 29,500? Simply 29,500 multiplied by 0.40 equals to 11,800. 11,800 is loss. So 11,800 minus 29,500, 17,700 is his selling price. Question number 4, a property dealer sells a property of worth rupees 19 lakh at 2% commission. How much does he receive? So first of all, calculate the 2% commission on 19,000,000. So 19,000,000 multiply by 2 by 100, or simply multiply by 0.02 equals to 38,000. So amount of commission is 38,000. A famous shoe company has 50,000 pairs of shoes, and management of the company wants to supply these pairs of shoes to 4 wholesale dealers in the ratio 4795. How many pairs of shoes will each dealer receive? Simply take the sum of the ratio, 4 plus 7 plus 9 plus 5 equals to 25. Out of 25 parts, 4 parts will goes to A, 7 parts will goes to B, 9 parts will goes to C, and 5 parts will goes to D. So total pairs are 50,000. 50,000 divided by 25 multiply by 4 multiply by 7 multiply by 9 and multiply by 5. So A will get 8,000 pairs, B will get 14,000 pairs, C will get 18,000 pairs, and D will get 10,000 pairs. Question number 6, that a manager plans to produce 100 units with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many units can be made by 40 persons if they work 3 hours daily? So how many units are missing? Keep units to the right side, and
other variables are persons and hours. So a manager plans to produce 100 units with the help of 25 workers working 4 hours a day, 4 hours a day. How many units can be made by 40 persons? 40 persons if they work 3 hours daily. Next step is to make the relationship one by one with missing variable. So if there are more persons, more units can be produced. So positive relations. So no need to reverse that order, simply 25 by 40. If you work more hours, or you can say if working hours increases, more units can be produced. ज़्यादा घंटे काम करेंगे, ज़्यादा units produce होंगे. तो positive relation. No need to reverse that order. 4 by 3 and 100 by x. X should be multiplied with 4 and 25 and 100 multiplied with 3 and 40 and solve for x. So 120 units. Paper 2018 supplementary. First question, that a salesman sold a merchandise of rupees 73,000 during a month. He receives 3% on the first rupees 15,000, 6% on the next 15,000 and 8% on the remainder. So out of 73,000, पहले 15,000 के ऊपर है जी 3%. So multiply by 3 by 100 or simply multiply with 0.03 equals to 450. On next 15,000, he is getting 6%. So multiply by 0.06 or multiply by 6 by 100 equals to 900. And what is the remaining amount? 73,000 minus 15,000 minus 15,000 equals to 43,000. On that 43,000, he is getting 8%. So 8 by 100 or 0.08 equals to 3440. So 450 plus 900 plus 3440 equals to 4790. 3 people invested rupees 900, 600, 300 in a business. How should they share a profit of rupees 900? So a ratio is not given. We will have to make the ratio. So on the basis of their investment, A's investment is 900, B's investment is 600, C's investment is 300. So first of all, make the simplified ratio 3, 6, 9, and after that the table of 3 will go to all these 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. So simplified ratio is 3 to 1. Take the sum of the ratio, 3 plus 2 plus 1 equals to 6. Total profit is 900. So 900 divided by 6 multiplied by 3 is the profit of A. 900 divided by 6 multiplied by 2 is the profit of B. 900 divided by 6 multiplied by 1 is the profit of C. Question number 3, that 20 men complete the construction of a bridge in 70 days. How many men are required to complete the same construction work in 50 days? So what are the variables? 20 men complete the construction of bridge in 70 days. So men and days are two variables in this question. So 21, place 20 here. Complete the construction of bridge in 70 days. 70 days. How many men are required? X should be placed here to complete the same construction work in 50 days. 50 days. Second step is to make the relationship of known variable with missing variable. So if there are more days, if you work more days, there are less men required to construct that bridge. Or alternatively, you can say that if there are more men, less days are required to construct the bridge. So negative relation. So negative relation में आप याद रखें, इसको कभी भी चेंज नहीं करते. जितने भी नॉन वेरिएबल होते हैं उसको चेंज करते हैं. तो हम डेज का रिलेशन देख रहे हैं मैन के साथ. तो डेज शुड बी रिवर्स बिकॉज days have negative relation with men. So 50 by 70. 20 by x equals to 50 by 70. Cross multiply करें, 50 multiply by x equal to 20 multiply by 70. And solve for x. 28 men are required to complete that project. Rawal Express takes 4.5 hours at a speed of 80 km per hour to go from Rawalpindi to Lahore. How fast should the train travel to complete the same journey in 3 hours? So simple इसके अंदर फार्मूला ये अप्लाई होगा स्पीड का. स्पीड हमेशा बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. और नाउ योर स्पीड is 80 km per hour. 80 km per hour equals to, you don't know about the distance and time, you need 4.5 hours, 4.5.
So distance is simply equals to 4.5 multiplied by 80 equals to 360 kilometer. So now we have distance and we can calculate speed. For speed, distance is 360 kilometer and time 3 hours. How fast should the train travel to complete the same journey in 3 hours? So simply 360 divided by 3 equals to 120 kilometer per hour. Next question, that on a deal the car dealer allowed 5% discount to a customer. Find discounted and actual price of the car if the discount allowed was rupees 6,000. So this 6,000 is 5%, and if we have 1% we can calculate the actual price. 6,000 divided by 5 multiplied by 100 is 120,000. So 120,000 is actual price, and discounted price out of this 120,000, 6,000 is discount, and discounted price is 114,000. Question paper 2019. Three men invested rupees 18,000, 12,000 and 6,000 respectively. How should they share the profit of rupees 36,000? Many questions have calculated on this scenario. So ratios are not given. So just simply take their investments as a ratio, 18,000, 12,000, 6,000, and simplified ratio is 1, 2, 3. These triple 3 will be cancelled with each other, and remaining is 6, 12 and 18. 6 ones are 6, 6 twos are 12, 6 threes are 18. So 3 to 1 is simplified ratio. Take the sum of the ratio, 3 plus 2 plus 1 equals to 6. Profit is 3600. 3600 divided by 6 multiplied by 3. 3600 divided by 6 multiplied by 2, and 3600 divided by 6 multiplied by 1. A's profit is 1800, B's profit is 1200, and C's profit is 600. Second question, that an accidental motor car of cost rupees 29500 is sold at a loss of 43.5%. Find the loss and the selling price. So loss is 43.5%. Actual price is 29,500. So simply 29,500 multiplied by loss is 43.5%. So multiply by 0.435, 12832.5. It is amount of loss. Actual price was 29500 minus loss is selling price 16667.5. Out of 80,000 seats in a cricket stadium, I think this question has already solved in previous papers, so you can consult that question. Abbas purchased some goods for rupees 7,500. He was allowed a trade discount of 7%. Find the amount of discount. This question also has calculated in previous paper simply, or you can see this from here. Simply calculate 7%, 7,500 multiplied by 7 by 100 equals to 525. A salesman is paid a salary of 500 per month and 1 per. This question has already solved in the previous paper. So we already have discussed this question, or you can see it from here. Now we turn to the multiple choice questions. MCQs appeared in papers from 2010 to 2019 including supplies. So in 2010 there was repeated question, so I ignored. In 2011, what percent of 1350 is 27? के 27 1350 का कितने परसेंट है, तो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं 27 डिवाइडेड बाय 1350 multiply by 100 equals to 2%. Correct option is 2%. Next MCQ, that a company reduces the price of its rupees 20,000 computer by 7%. What is the new price? कि एक कंपनी अपने कंप्यूटर्स जिसकी प्राइस 20,000 है 7% प्राइस रिड्यूस की है, तो बताएं कि न्यू प्राइस क्या होगी। तो 20,000 का पहले तो 7% मल्टीप्लाई बाय 0.07, 1400 रिड्यूस हुई है, तो न्यू प्राइस 1400 माइनस कर दें 20,000 से 18,600,
In a certain college there are 240 girls and 360 boys. What is the ratio of the number of girls to the number of pupils? सिंपली इसकी सिंप्लीफाइड रेशियो निकालनी 240 और 360 की, यानी कि 240 का 0 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 36 और 24, और इसके ऊपर ले जाएं जी टेबल, आप 6 का भी जा सकता है, 6 4s are 24 एंड 6 6s are 36, 4 6, और फिर आगे 2 का चला जाएगा, 2 2s are 4 एंड यहाँ पे आई थिंक 2 3 is a correct option, not 2 5. 2 3 is your correct option. बिकॉज 0 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 24 और 36, और 24 के ऊपर 6 का टेबल जाएगा, 6 4s are 24, 6 6 are 36, और या 12 का ले जाएं आप, 12 2s are 24, 12 3s are 36. तो 2 3 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है जी, इफ़ द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट इन अ कॉलेज इज़ 1 to 18 एंड देयर आर 360 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर? इनके बीच में जो रेशियो है वो है 118 की, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, यानी कि पहली रेशियो जाएगी टीचर्स को एंड सेकंड रेशियो विल गोज टू स्टूडेंट्स. एंड इफ देयर आर 360 स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर? सो 360 स्टूडेंट्स जो हैं वो 18 की रेशियो के साथ हैं, और 18 की रेशियो के साथ अगर 360 स्टूडेंट्स हैं तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 360 डिवाइडेड बाय 18 20. सो आपको 20 टीचर्स आपको चाहिए. द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. करेक्ट ऑप्शन इज प्रोपोर्शन. रुपीज़ 250 इज 2.5% ऑफ रुपीज़. अभी इसको देख लेते हैं जी. 250 जो है वो है 2.5%, तो अगर हमारे पास 1% होगा तो हमें मालूम हो जाएगा. 250 इज़ 2.5% डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, 10,000. आप कंफर्म भी कर सकते हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.025, 250. ओके. Next MCQ is the smallest term of 4 by 9 to 1 by 3 r. 4 by 9 to 1 by 3 r. 4 ratio 3. एक का ऊपर वाला ले लें, एक का नीचे वाला, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ. और an electric meter shows 20 units for consuming electricity in 1 hour. In 1 day electricity consumed will be. An electric meter shows 20 units for consuming electricity in 1 hour. एक घंटे के अंदर 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं. इन 1 डे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, तो सिंपल इज दैट, अगर एक घंटे के अंदर 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं तो देर आर 24 आवर्स इन 1 डे. सो 24 मल्टीप्लाई बाय 20, 480 यूनिट्स. In a consignment of 700 kg fresh mangoes, 13% mangoes were found rotten. The quantity of good mangoes was, तो सिंपल इज़ दैट 700 मैंगोज़ के अंदर, 700 kg मैंगो के अंदर जो 13% हैं, 91 kg वो हैं रॉटन. और जो फ्रेश मैंगोज़ होंगे 91 को माइनस कर दें 700, 609, तो 609 आपके पास जो गुड क्वालिटी मैंगोज़ हैं वो होंगे. A bag of sand weighs 16 kg and a bag of cement weighs 20 kg. The ratio of weight of cement to that of sand is, simply ratio निकाल लें 16 और 20 की. ये आपके पास द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीमेंट टू दैट ऑफ सैंड. तो ये ख्याल रखना है कि पहले क्या कहा जा रहा है. ये यहाँ पे बड़ा ट्विस्ट हो सकता है, आप यहाँ पे गलत भी कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि क्या लिखा हुआ है, सीमेंट. तो सीमेंट का क्या वे है, 20. सो 20 विल बी प्लेस्ड फर्स्ट. And second is sand. So second sand 16 kg will be placed next. So 20 16. So 2 5s are 20.
sorry, 16. 4 5s are 20 and 4 4s are 16. 5 4. Correct option is 5 4. Next MCQ, that the population of a city is increased from 28600 to 31317. The percentage increase is, you can calculate it very easily. There are many ways to calculate. After increase, the population is 31317 divided by previous population 28600, multiply by 100 and 109.5. So which means 9.5% increase. Next MCQ, a milkman mixes milk with water in the ratio of 7 to. We already calculated this question in short questions in previous paper. So you can consult from there. 7 to ratio, mixed milk is 35 liter, and okay, you can calculate it from here. You have mixed milk 35 liter and ratio is 7 to. So sum of the ratio is 9. So 35 divided by 9. What is the ratio? Milkman mixes milk with water. So 7 portions are related to milk and 2 portions are related to water. What is the amount of pure milk? Multiply by 7. 27.22 liters. So correct option is this. 4 by 9 to 1 by 3. Simplest form of 4 by 9 to 1 by 3 is, correct option is 4 to 27. Simply 4 multiplied by 1 equals to 4. 9 multiplied by 3 is 27. The cost of a chair is rupees 160. The markup is 20%. What is the amount of profit on cost? Simply cost is 160 and there is 20% markup. Profit is 20%. So 160 multiplied by 0.20 equals to 32. So your profit is 32. The comparison of two similar quantities is called ratio. If the simple interest on rupees, okay, it is the question of simple interest, we already discussed. Amount paid to an agent as the remuneration of his services is called, correct option, commission. The ratio between 80 to 640, just make simplify ratio. 10 8s are 80, 10 64s are 640 and 64. 8 and 64. 8 ones are 8 and 64 divided by 8. So 1 ratio 8. Correct option is 1 8. What percent of 1350 is 20? We already calculated this. I think it was the first MCQ. What is the total amount of commission on sale to rupees 16800 if the commission rate is 8%? So total sale is 16800 multiplied by 0.08. Commission is 1344. A college has 80 teachers, of which 60 are commerce teachers and 20 are science teachers. The ratio 3:4 represents commerce teachers to total teachers, because you need to make little calculation. So total teachers are 80, 80 teachers, of which total teachers are 80, of which 60 are commerce teachers and 20 are science teachers. और रेशियो अगर हो 3:4 की, तो कॉमर्स टीचर्स आपके पास कितने हैं जी? 60 और 23s are 60 and 24s are 80. So 3:4 ratio represents commerce teachers to total teachers. What percent of rupees 84 is of rupees 400? So simply you can calculate this. 84 400 का कितना परसेंट है अभी देख लेते हैं जी. 84 divided by 400 multiplied by 100, 21%. Zinc and copper are mixed into ratio of 2:3 to make up brass. What is the amount of each metal in 144 lb or pound of brass? जिंक और कॉपर इनकी रेशियो है 2:3 की, यानी जिंक की रेशियो है 2 और कॉपर की है 3, और मिक्स मटेरियल है आपके पास 144 पाउंड का.
तो इनकी रेशियो जो है ये हम निकाल लेते हैं जी। सम ऑफ रेशियो क्या है 5 और टोटल मिक्सचर कितना है 144। 144 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 57.6 एंड 144 divided by 5 multiply with 3 86.4, so that is correct option. Mr. Ali gets 20% profit from his investment. His profit is rupees 5080. What is his amount of investment? ये प्रॉफिट हासिल कर रहा है जी 20% एंड दिस प्रॉफिट इन अमाउंट इज 5080 विच मीन्स 5080 is 20 equal parts. So what is his amount of investment? So if we have one equal part 5080 divided by 20 multiply with 100 25400. Next is the formula for percentage of a number is base multiply by rate. Find x if 20 by 7 equals to 80 by x. Simply cross multiply 20 multiply by x equals to 80 multiply by 7 or solve for x. 80 multiply by 7 560 divided by 20 28. Correct option is 28. A salesman walks 3.5 km in 1 hour. By same speed in 2.5 hours he walks. तो ये सिंपली स्पीड का फार्मूला आप अप्लाई कर लें। 3.5 किलोमीटर जो है वो 1 घंटे के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 किलोमीटर बनेगा ये। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इस फार्मूले को माइंड में रखें। If 2% of number is 400, what is the number? Which means 400 is 2%. And if we have 1%, we can calculate that number very easily. 400 divided by 2. 200 is 1%. Multiply by 100 is 20,000. So 20,000 is correct option. The value of x in proportion to 7x 49. So extreme multiply with extreme, 2 multiply with 49 and 7 multiply with x. 49 multiply with 2 divided by 7. 14 is correct option. Amount paid to an agent has as a remuneration of service. कोई भी किसी भी एजेंट को जिस वक्त आप कुछ पे करते हैं उसकी खिदमात के बदले में तो कमीशन कंसिडर किया जाता है। इफ़ 2:7:x:49, उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा से उन्होंने ज़रा और फॉर्म में लिख दिया, 14 है करेक्ट ऑप्शन। कमीशन ऑन ₹3500 was ₹175. द रेट ऑफ कमीशन ऑन ₹3500 was ₹175. सो 175 कमीशन मिला है जी आपको कितने पे 3500 पे, डिवाइड बाय 3500 मल्टीप्लाई विद 100, तो 5% कमीशन है। सो ये थे जी आज इसके MCQs फ्रॉम 2010 टू 2019 और इनके अंदर जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं बिजनेस अरिथमेटिक के टॉपिक से। अब रिमेनिंग एक आपका टॉपिक जो है वो रह चुका है और वो उसकी मैं बना रहा हूँ अनकरीब जो है आपके पेपर से पहले उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, और वो है जी लीनियर इक्वेशंस इंक्लूडिंग some questions related to algebra, quadratic equations, factorization, the method of completing square and linear equations. So इसके बाद आपका जितना भी सिलेबस है related to paper business mathematics ICOM 1 2021 जो कोविड का रिड्यूस सिलेबस है उसके मुताबिक ये आपका तमाम का तमाम कवर हो चुका है। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये याद रखें, और क्वेश्चंस को समझें और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अदर पर्सन्स अराउंड यू। थैंक यू।